So before we move to the Bayes theorem, right? So we were seeing one of the questions. So here I've written some more questions, right? Some small questions, which the types which are possible. Say suppose it is given that A intersection B is equal to 5. So A intersection B is an empty set. And what we have to prove, we have to prove that probability of A is less than or equal to probability of B bar, right? So probability of A is less than or equal to probability of B complement, right? So proof wise, so it is given to us that A intersection B is empty, right? So you see, if this is my set A, this is my set B, and so this is complete my set A, right? So if you see, A can be written into two parts. A can be written into two parts. So this is one part, right? So one part is in red and one part is in yellow. So if you see red part is what? Red part is A intersection with वो portion जो B में नहीं है. So you see, this portion is the portion of A which is in B, and this is the portion of A which is not in B. So obviously this is in B complement. So therefore, A can be written as union of A intersection B and A intersection B complement. And A intersection B is given to me as phi. So phi union this A intersection B complement. And हमें पता है अगर हम किसी भी set की phi के साथ union ले, so union is an empty set. So I mean, so there will be no change, right? So this becomes what? So A is equal to A intersection B bar. So if you see, A is nothing but the intersection of A and B bar. And हमें पता है intersection दोनों sets का part होती है. So we know A intersection B bar is a subset of B bar. Obviously, A intersection B bar किसके equal है? A intersection B bar A के equal है. So A is a subset of B bar. और हमें पता है जब एक set दूसरे set का subset होता है, तो उसकी probability हमेशा उस set से कम होती है. So therefore, probability of A is always less than or equal to probability of B bar. Again, there is one more type of question. Suppose आपको कुछ sets की probability given होती है. So probability of A is say 3/4, probability of B is 5/8. So what you have to show that probability of A union B is greater than or equal to 3/4. So जितनी भी हमने articles किए हैं, जितनी भी हमने properties करी हैं probabilities की, we'll make use of these properties and we'll try to see the results, right? So we want to show A union B is greater than, right? हमें probability of A या probability of B given है. So since we have to show this is greater than or equal to 3/4, so यहाँ से हमें एक hint मिल रहा है कि हमें A का use करना है. तो if you see, A is always a part of A union B. So A is a part of A union B. So obviously probability of A will be less than or equal to probability of A union B. And probability of A कितनी given है? 3/4 given है. So यहाँ से क्या आ गया? Probability of A union B is greater than or equal to 3/4. Now again, if you see, the next part is probability of A intersection B. अब हमें पता है A union B और A intersection B में एक formula होता है, that is this formula. So probability of A union B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, right? तो अब यहाँ से अगर हम देखें, अब probability of A is given to us as 3/4, probability of B is given to us as 5/8, right? And one thing we know, because हमें equality चाहिए, तो हम यहाँ we can use this as less than or equal to sign, because हमें पता है total probability is always less than or equal to 1. So this total equality is less than or equal to 1. 1 को हम एक side पे ले आए, probability of A intersection B को दूसरी side पे ले आए. So what this whole becomes? So अगर आप इस fraction को पूरा solve करोगे, you will get 3/8. So probability of A intersection B is greater than or equal to 3/8. So this is done. Again, if you see, right hand side is 5/8 and 5/8 is nothing but probability of B. So हमें पता है A intersection B is a subset of B, right? Obviously you could have used A here, but आपको equality 5/8 में चाहिए, इसलिए हमने B use किए. तो A intersection B is subset of B. Obviously the probability of A intersection B will be less than or equal to probability of B, and probability of B is nothing but 5/8. So right, so these small properties help us to derive certain big theorems, right? So now I'm moving to one of the important concept of this portion which you have not done in your class 12, right? This is the Bayes theorem. So कई बार exam में article comes as state and prove Bayes theorem, or you can even get question on Bayes theorem, right? So this is one of the important topic. So before I start, I'll give you an example of how this Bayes theorem is basically used. See, suppose what is happening is, suppose there is a call center, and आपको पता है in call center, some calls, so
we know how a call center works. So there are telephone operators. So say there are three operators, A1, A2 and A3, right? And we know कि जब कोई कॉल आती है, जब कोई कॉल आती है तो यहाँ सपोज कोई कॉल रिसीव करी मैनेजर ने, तो कॉल मैनेजर क्या करता है, या तो वो A1 को दे देता है, या वो A2 को दे देता है, या वो A3 को दे देता है, right? And then all of the three talks to the customer and the problem gets sorted. अब suppose कर लो that एक कॉल आती है मैनेजर को, मैनेजर गेट्स वन कॉल एंड द मैनेजर सेज, द कॉलर सेज कि आपके कॉल सेंटर से मेरी बात हुई थी एंड आई डोंट नो हु द पर्सन इज, बिकॉज वी डोंट नो, जब हमको हमें कस्टमर केयर से बात आती है वी डोंट नो हु द पर्सन इज, तो हमारी बात हुई थी एंड द पर्सन सेड these things and I'm not happy with what the person said, so there is a complaint kind of call. So अब मैनेजर को ये पता है कि इन तीनों के पास ही कॉल जाती है, अब मैनेजर को ये पता लगाना है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो कॉल A1 ने ली हो, या वो कॉल A2 ने ली हो, या वो कॉल A3 ने ली हो, right? So this concept basically is helpful, right, by using Bayes theorem. I'll give you one more example. Say suppose there are three machines, right? I will use for machines E1, E2, E3, so we'll be using the same thing in your, so there in a factory there are three machines, तो जो प्रोडक्शन होती है वो इन तीन मशीनों से होती है, E1 से, E2 से और E3 से, तो ये तीनों मशीन्स प्रोडक्ट बनाती हैं एंड मैनेजर क्या करता है, इंस्पेक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट को इकट्ठा करता जा रहा है, स्टोर रूम में रखता जा रहा है, एंड ऑब्वियसली व्हाट द मैनेजर इज डूइंग, सो ही इज स्टोरिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोर रूम. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे E1 से भी आए हैं, कुछ E2 से आए हैं, कुछ E3 से आए हैं. अब जो क्वालिटी वाली टीम है वो इंस्पेक्शन के लिए आई, उसने देखा कि इस लॉट में, ये जो आपकी प्रोडक्शन हुई है इस लॉट में बहुत सारा माल ऐसा है जो डिफेक्टिव है. So suppose this item is defected, or say suppose this item is defected. Now what they want to see कि defected item तो आ रही है, but the thing is कि obviously अगर हम जहां से defects आ रहे हैं अगर हम उस defect को ठीक नहीं करेंगे तो we will not be able to rectify the problem for the future. So for them the challenge is that you have to find कि वेदर ये जो डिफेक्ट आए हैं ये मशीन E1 से आए हैं, या मशीन E2 से आए हैं, या मशीन E3 से आए हैं. So Bayes theorem help us to work in the reverse order, right? So let us with these examples let us move with the what you call it as the statement of the Bayes theorem, right? So the Bayes theorem says if E1, E2, En, right? So please, the statement is also important from examination point of view. If E1, E2, En are mutually disjoint events, right? So mutually disjoint events. So mutually disjoint का मतलब क्या हो गया कि आपस में इन events में कुछ भी common नहीं है. So this is the reason I was saying कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो या E1, ऐसा नहीं है कि E1 और E2 मिलकर कोई दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. नो, E1 प्रोडक्ट्स बना रहा है, E2 प्रोडक्ट्स बना रहा है, En प्रोडक्ट्स बना रहा है, आपस में कॉमन में वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट? सॉरी. With probability of EI not equal to 0, right? With probability of EI not equal to 0, यहाँ पे you can add one word. If E1, E2, so on up to En are mutually disjoint and exhaustive. So this word is important, exhaustive. So if E1, E2, En are mutually disjoint and exhaustive, right? So the word should be, so you can somewhere please write, and in your book it might be given. So if E1, E2, En are mutually disjoint and exhaustive events with probability of EI not equal to 0. See why I have written exhaustive, because आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो कॉल सेंटर में कॉल आ रही है तो या वो A1 के पास जा रही है, या A2 के पास जा रही है, या A3 के पास जा रही है, और कहीं नहीं जा रही. So basically अगर आपका this is your sample space, so exhaustive means जब आप सारे E1, E2, En fit करोगे, E1, E2, so on, En, so आपको complete sample space मिल जाएगी. So you see, so and if you see from this diagram, they are disjoint also. So you see, this is your E1, this is your E2, this is your E3, and so on. This is your En. So this is your complete sample space S, right? So they are what? They are N events. They are mutually disjoint, so they have nothing in common, and they are exhaustive also. तो जब आप इनको रख रहे हो तो आपको complete sample space मिल रही है, right? Then for any arbitrary event A, which is the subset of
यूनियन आई इज फ्रॉम 1 to en I ei. So basically A कोई ऐसा सेट है, A is some set. So you see A, हमने क्या जब आर्टिकल डिस्कस किया था, what we said, so they are making some products. So you see, so A is the product. So A is the event जो बेसिकली इन सबके साथ कॉमन है, राइट? तो A is a subset of their union. So basically what is happening, so some products are made by E1, some products are made by E2, some products are made by E3, some products are made by E4, and so on. Some products are made by En, such that probability of A is greater than 0. So probability of A greater than 0 means there is a production, so production is happening. Then we have probability of ei mod A. So if you see, probability of A is nothing but, अगर मैं आपको पिछले एग्जांपल की अकॉर्डिंग बताऊं, so this is the probability of production. So this is the probability that the product is manufactured. So this is the probability that the product is manufactured. So you see, then the probability of ei mod A, तो अगर आप इसको रीड करो तो क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है, सो दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर हो चुका है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इट इज मेड बाय E1 और E2 और E3 और En, राइट? सो दिस इज व्हाट वाज सेइंग कि क्वालिटी वालों ने एक प्रोडक्ट उठाया लॉट में से और वो डिफेक्टिव निकला, अब उनको ये चेक करना है कि वो E1 ने बनाया है, E2 ने बनाया है या En ने बनाया है. सो प्रोडक्ट इज ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मेड बाय Ei, right? So this is Bayes theorem statement. So what this probability is, so Bayes theorem says this probability is equal to probability of ei. So ei is nothing but the probability that a machine makes the product, and probability of A mod ei over summation probability of ei, probability of A mod ei. So बेटा यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही हैं. So first one means product बन चुका है, so A is in the denominator, A has already happened and EI ने बनाया है, so EI ने बनाया है, already product आपके हाथ में है. And second thing is कि EI की प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A mod EI, कि आपके पास मशीन ऑलरेडी EI है और वो कितने प्रोडक्ट बना रही है, सो दैट इज A mod EI, राइट? सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस नोटेशन, राइट? सो दिस इज द स्टेटमेंट. सो इफ यू सी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बस डिनोमिनेटर में इन सारी टर्म्स का I1 to N का सम हो रहा है, सो देयर इज अ समेशन, right? So we will come to this part. This summation is known as probability of A. Denominator is nothing but probability of A, right? So this was the statement of the Bayes theorem. You should learn this statement. So proof wise, this is very, very easy. So proof wise, now what is given to us, we are given to us that A is a subset of union I is from 1 to N. So A is a subset of union I is from 1 to N, right? So obviously अगर आप देखो, अगर आप इस वेन डायग्राम में देखो, A जो है वो यूनियन का पार्ट है, so A का कुछ पोर्शन E1 से आ रहा है. So you see A को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A is A intersection E1, then A intersection E2, then A intersection E3 and so on up to A intersection En. So obviously क्योंकि A जो है वो इन यूनियन का पार्ट है, तो A का कुछ पोर्शन E1 से आएगा, कुछ पोर्शन E2 से आएगा, कुछ पोर्शन E3 से आएगा and so on. So you see, so that's it. This is what we have written. So A is subset of union I is 1 to N EI. So अगर मैं union I is from 1 to N EI और A की intersection लूँ तो मुझे A मिलेगा, right? तो अगर मैं distributive property लगा दूं, so union बाहर आ गई, intersection अंदर चले गई. So union I is from 1 to N A intersection EI. So this is what I was saying. Venn diagram से directly आपको ये वाला स्टेप दिख रहा है कि A को आप यूनियन लिख सकते हो. किसकी यूनियन? A का वो पार्ट जो E1 से आ रहा है, so A intersection E1 यूनियन A intersection E2 यूनियन A intersection En, right? All these parts. And हमें पता है जो इंटरसेक्शन होती है वो सेट का सबसेट होती है. So A intersection EI is subset of EI. A intersection EI is subset of EI and EIs are given to as mutually disjoint. तो ऑब्वियसली अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो A इंटरसेक्शन EI में आपस में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बिकॉज अगर कोई एलिमेंट A इंटरसेक्शन EI में है, सारे इंटरसेक्शन में है, so अगर सारे A इंटरसेक्शन EI में कोई एलिमेंट होगा तो ऑब्वियसली वो EI में भी होगा. So obviously वो इनकी इंटरसेक्शन में भी होगा बिकॉज वो सारे EI में है. बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज EIs are mutually disjoint. It means ये जो हमने assume किया था कि कोई एलिमेंट इन सब में है, that is wrong.
So means their intersection is also empty. So now let us take probability on both sides. So probability of A कितनी हो जाएगा? So this is probability of union I is from 1 to n, A intersection EI. और अभी हमने ऊपर बोला है कि ये जो सेट है, they are disjoint sets. तो हमें पता है यूनियन अगर सेट्स डिसजॉइंट है तो यूनियन समेशन में चेंज हो जाती है. तो ये क्या बन जाएगा? समेशन I is from 1 to n, probability of A intersection EI, राइट. और जब हमने कल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी करी थी तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EI को हम क्या लिख सकते हैं? probability of EI into probability of A mod EI. So from here you see probability of A is nothing but summation I is from 1 to n probability of EI into probability of A mod EI. सिर्फ इतना पोर्शन बेस थ्योरम का that is known as total probability theorem. तो कई बार सिर्फ इतना भी आ जाता है state and proof total probability theorem. So total probability theorem means what? So if E1, E2, so on are mutually disjoint and exhaustive events, and A is an event which is subset of union I is from 1 to n. So ऊपर जो सारी statement हमने लिखी थी, then right? सिर्फ probability of A कितनी बन जाएगी? Then probability of A अभी हमने प्रूफ किया कितना बना था? डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर I is from 1 to n probability of EI into probability of A mod EI. So only this proof, यहां तक जो हमने प्रूफ किया है, this proof is known as total probability theorem. So ये जो आगे वाला ये जो लाइन है, so probability of EI mod A is nothing but probability of EI into probability of A mod EI over probability of A. This is the base theorem. So let us continue with the proof. So अब हमने शो कर दिया, so we are done with the proof. So हमने शो कर दिया probability of A is equal to summation I is from 1 to n probability of EI into probability of A mod EI, right? So now let us, so हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए probability of EI mod A. So probability of EI mod A. So by definition probability of EI mod A कितना होता है? So this is probability of EI intersection A over probability of A. और अभी हमने probability of A की वैल्यू निकाली है, summation I is from 1 to n probability of EI into probability of A mod EI. और ऊपर डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं? So probability of A intersection EI हमने कल किया था. So this is probability of EI into probability of A mod EI, right? So that's it. यही हमें प्रूफ करना था. So this is base theorem. So please आपने याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड पे EI mod A है, A नीचे है, EI ऊपर है. राइट हैंड साइड पे A ऊपर है और EI नीचे है, राइट? और डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर का समेशन है. सो डिनोमिनेटर में इट्स समेशन I is from 1 to n probability of EI into probability of A mod EI, और न्यूमिनेटर में it is only probability of EI into probability of A mod EI. Only one term is there. Denominator में we have the sum of all the terms. Okay. So now the chances of the very first step should be you should define the probability very carefully, right? So events को खासकर कोई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आप नॉट इवन इन बेस थ्योरम किसी भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस कर रहे हो, सबसे पहले इवेंट्स डिफाइन करो, क्वेश्चन अपने आप स्ट्राइक कर जाता है. The chances that a doctor will diagnose a disease X correctly is 60%. तो यहाँ से मुझे एक चीज पता लग रही है that Dr. A will diagnose a disease X correctly. So this is one event. Okay. So one event is doctor ने correct diagnose किया है, right? So say this event is E1. अब बेटा एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपके जो बेस थ्योरम में है जो इवेंट्स है वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है. सो आपको जब उनका पूरा यूनियन लोगे तो आपको सैंपल स्पेस मिलना चाहिए, राइट? एंड अब यहाँ से एक चीज क्लियर है कि अगर एक करेक्ट डायग्नोज हो रहा है तो ऑब्वियसली मुझे पता है एनी सेट एस इज व्हाट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. तो ऑब्वियसली मुझे मेरे इवेंट्स में अगर मैं E1 डिफाइन कर रही हूँ करेक्ट डायग्नोज, राइट, then in this case one event is again very much visible, that event is incorrect diagnosis, right? So हमने ये event साथ के साथ कर दिया. So E2 is the event that the doctor diagnosed the disease incorrectly, because या correctly होगा या incorrectly होगा. अब मशीन के केस में तो हो सकता है कि 10 मशीनें हो, बट यहाँ पे तो पता है कि अगर एक इवेंट करेक्ट डायग्नोज है तो दूसरा इवेंट इनकरेक्ट डायग्नोज हो जाएगा, right? So let us move further. The chances that patient will die by his treatment after correct diagnosis,
तो देखो करेक्ट डायग्नोस तो आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया था. अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई कि द पेशेंट डाइज बाय हिज ट्रीटमेंट. So the patient dies by his treatment. So let us call this event as one more event that the patient dies. So E is the event that the patient dies. Now let us read the statement again. The chances that the patient will die. So patient की death हो गई after the correct diagnosis. तो पहले डॉक्टर ने करेक्ट डायग्नोस किया था बट पेशेंट की डेथ हो गई. तो यू सी डॉक्टर ने करेक्ट डायग्नोस किया बट पेशेंट की डेथ हो गई. So what is this? This probability is 40%. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, सिर्फ आपको इवेंट्स डिफाइन करने आने चाहिए. Then the chances of death by wrong diagnosis. तो डेथ हुई है बट डायग्नोस रॉन्ग हुआ. That is 70%. 0.7. 7500 0.7. Right? A patient of Dr. A who had disease X died. अब देखो, a patient, अब डॉक्टर का एक पेशेंट की डेथ हो गई है. What is the chance that his disease was diagnosed correctly? So now if you see, patient की already death हो गई है. What is the chance that the disease was diagnosed correctly? So this is. So here if you see E1 E2 सारे इवेंट्स थे, तो अब यहाँ पे E1 न्यूमरेटर में आ रहा है. E1 न्यूमरेटर में आ रहा है. दिस इज द रीजन हमें यहाँ से पता लग रहा है हमें बेस थ्योरम यूज करनी है. सो अब मैं अगर बेस थ्योरम की बात करूँ, सो इफ आई टॉक अबाउट बेस थ्योरम, सो मुझे क्या निकालना है? आई वांट टू फाइंड, सो बाय बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 mod E. तो हमें पता है ये कितनी होती है. This is probability of E1. So probability of EI. अब यहाँ पे EI की जगह कितना है? E1. So EI की जगह कितना आता है? E1 into probability of E mod E1. जो न्यूमरेटर में है वही नीचे है यहाँ पे. Over summation probability of E1 EI. अब नीचे EI आ जाएगा into probability of E mod EI. और I की रेशियो कहाँ से कहाँ जा रही है? I अब यहाँ पे दो इवेंट्स है, so I is 1. So that's it. All these events you know. So all these events you know, right? So here if you see, right? Probability of E1. So probability of E1 आपको कितनी given है, right? So the chances that a doctor will diagnose a correct disease is 0.6. So probability of E1 आपको कितनी given है? 0.6. And then probability of E mod E1 कितनी लिखी थी हमने? 0.4, right? Over. नीचे क्या आ जाएगा? पहले I1 लिया, so probability of E1 again same है 0.6. probability of E mod E1 कितनी है? 0.4 plus probability of E2 was nothing but the complement. E2 was nothing but the complement. So 0.6 के complement 1 होना चाहिए. This is 0.4 और साथ में कितना आ जाएगा? So you just have to evaluate this, and ये भी जो भी आंसर होगा that is the required probability. So questions are straightforward. Only thing is which is difficult is yes, you have to make the events. Let us take one more example, then the things will be more clear. So if you see the probability of X, Y, Z being manager are 4/9, 2/9 and 1/3. तो अब यहाँ पे देखो clearly दिख रहा है कि T ही manager है. So say E1 is the event that X is the manager, E2 is the event that Y is the manager, E3 is the event that Z is the manager. So probability of E1 कितनी given है? So probability of E1 is 4/9, probability of E2 is 2/9 and probability of E3 is 1/3. The probability that the bonus scheme will be introduced, right? So the bonus scheme will be introduced. तो अब ये नया इवेंट आ गया. So let us say this event is B, that B is the event that the bonus scheme is introduced. अब आगे वो क्या कह रहा है? The probability that the bonus scheme will be introduced if X, Y, Z are manager are this. तो means अगर X manager है और bonus scheme introduce हुई तो probability कितनी है? 3/10. So you see X manager है, so X manager को हमने event क्या लिया था? E1. So probability of E1,
bonus is introduced, X is the manager. Bonus is introduced, Y is the manager. Bonus is introduced, Z is the manager. So you see, this is the probability. These are given. Now, what is the question? What is the probability that the bonus scheme is introduced? तो ये देखो, bonus scheme is introduced. हमें पता है bonus हमने क्या लिया था B. तो हमें क्या निकालना है? We have to find the probability of B. तो इसी क्वेश्चन को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो if you remember, this is nothing but the total probability theorem. तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वहां पे ए था, यहाँ पे बी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होता है? सम. सो अब हमने प्रूव किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था? समेशन आई. ये हमारा डिनोमिनेटर था. आई इज फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मॉड बी. तो अब यहाँ पे ए की जगह बी है, तो अगर मैं समेशन को ओपन करूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मॉड E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मॉड E2 probability of E3 probability of B mod E3. ये सारी probabilities आपको given है ऊपर. Just put the values, get the answer. And if I ask the second part, if the bonus scheme has been introduced, तो already bonus scheme introduce हो चुकी है. So already bonus scheme introduce हो चुकी है, तो B आ गया नीचे. What is the probability that the manager appointed was X? तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है this probability, probability of X mod B. तो ये क्या बन जाएगा? बाय बेस थ्योरम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पे सॉरी, द मैनेजर वाज X, तो हम X नहीं लिखेंगे, वी विल राइट E1. हमने इवेंट E1 लिया. तो बाय बेस थ्योरम व्हाट दिस प्रोबेबिलिटी विल बिकम? दिस विल बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 mod B कितनी हो जाएगी? दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऊपर उल्टा आएगा. देखो इसको याद कैसे रखते हैं? वैसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा इसका. सो B mod E1 यहाँ पे उल्टा हो जाता है. तो हमें पता है जो डिनोमिनेटर में होता है वही न्यूमरेटर में आता है. सो E1 ओवर दिस इज समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B mod EI. I is from 1 to n. तो यहाँ पे 1 2 3 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B mod E1 आपके पास है, और ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और ये आपने अभी फर्स्ट पार्ट में निकाला था. सो ऑल दीज वैल्यूज आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू. वी कैन जस्ट पुट बैक द वैल्यू एंड वी कैन गेट द